तो कहानी की शुरुआत होती है गेराल्ट से, जो कि जंगल में अपनी याददाश्त खोया हुआ रहता है। वहीं पे उसे उसके साथ ही विचर मिलते हैं, जिसमें से लैम्बार्ड, लियो, एजिकेल और वेसेमेर भी होता है। तो ये लोग उसे कैरमोहर ले जाते हैं, जहाँ उसे ट्रिस मैरीगोल्ड भी मिलती है, जहाँ ये अपनी सारी याददाश्त भूल चुका होता है। वहीं पे सैलामांडर्स के लोग अटैक करते हैं विचर का सीक्रेट चुराने के लिए कि विचर लोग कैसे बनते हैं। तो बेसिकली जो विचर रहते हैं वो म्यूटेटेड लोग रहते हैं। तो इसी बीच इनका एक साथी लियो मर जाता है। तो सैलामांडर्स का पता लगाने के लिए और विचर का सीक्रेट रखने के लिए और लियो की मौत का बदला लेने के लिए भी, और साथ ही साथ बेरेंगार को ढूंढने के लिए ये सारे लोग टुकड़ी में बढ़ जाते हैं। वहीं पे गेराल्ट ऑफ रिविया टिमेरिया के एक छोटे शहर विजीमा में जाता है, जहाँ पे उसे सबसे पहले तो उस शहर के अंदर नहीं आने देता, क्योंकि उस टाइम पे बीमारी चल रही होती है। तो ये गांव के बाकी लोगों की मदद करता है, जहाँ इस एबिगाल को भी बचा लेता है, और सैलामांडर्स के कुछ लोगों के साथ इसका आमना सामना भी होता है। उसके बाद इसे शहर के अंदर जाने दिया जाता है। वहाँ पे उसे एक डिटेक्टिव मिलता है। वो डिटेक्टिव उसकी मदद करता है सैलामांडर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन उस डिटेक्टिव को आज़ार जावेद मार देता है और उसकी जगह ले लेता है। ये बात हमें पता चल जाती है। हम उससे लड़ने जाते हैं एक टावर में, जहाँ पे प्रोफेसर और आज़ार जावेद दोनों साथ लड़ते हैं, लेकिन हम उसमें घायल हो जाते हैं और हमको चकमा दे के भाग जाते हैं। वो हमें ट्रिस बचा लेती है। ट्रिस हमें ट्रेड क्वार्टर ले जाती है, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। वहीं हमें प्रिंसेस एडा भी मिलती है, जिसका हमने स्ट्रेगा का कर्स उतारा हुआ रहता है। प्रिंसेस एडा के साथ हमारी अच्छी बातचीत होती है। उसके बाद हम सैलामांडर्स का पता लगाते, तो बाद में हमें ये पता चलता है कि प्रिंसेस एडा जो है वो सैलामांडर्स के साथ दे रही है, और उसके बाद वो हमें मारने का हुक्म दे देती है, लेकिन ट्रिस फिर से हमें टेलीपोर्ट कर देती है। यहीं पे हम प्रोफेसर को मार देते हैं और अंत होता है प्रोफेसर का। साथ ही साथ प्रोफेसर और सैलामांडर्स लोग एल्विन के ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र रखे रहते हैं। पता नहीं रहे एल्विन से क्या काम होता है, वो आगे ही जाके पता चलेगा। और अब आगे ये सिटी किस टाइप की है? अभी कुछ अलग है। कुछ होलोग्राम सा नहीं लग रहा आपको, मतलब ये देखने में? गायब हो गई ये तो। You fell out of that strange hole in the sky. Clever girl. Mother says I meddle. Perhaps. I know everything. Ask me. ऑलराइट, तो अभी क्या हुआ? बेसिकली हमें ट्रेस ने कहीं टेलीपोर्ट कर दिया। ये कौन सी जगह है? हम इसी से पूछते हैं। What is this place? This is the shore. Beyond lies murky waters, and beyond that, fields. By boat, you can get to the island. You do know a lot. I know everything. Ask me. अच्छा, तो अभी इसने बताया कि ये शोर है। यहाँ पे एक मर्की वाटर करके भी एक प्लेस है। उसके बाद एक आइलैंड भी है छोटा सा, एक फील्ड भी है। तो आई थिंक 1 2 3 4 जगह हैं, मतलब इसमें घूमने लायक। तो यहाँ पे क्या हुआ What's है? happened here recently? Alina, the village chief's daughter, will soon marry. For gold, Mother says. Right. Mother also says Alina's sister Selena yearns for Julian. He's Alina's fiancé who lives at the inn. What does yearn mean? She really likes Julian. Oh, then Julian yearns for Alina, Selena yearns for Julian, and Alina likes Julian's gold but yearns for Adam. Adults are stupid. Undeniably. I know everything. ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई शादी हो रही है एलिना की जूलियन के साथ। सलीना उसकी बहन है, जिसके साथ कुछ से मतलब ट्रायंगल वगैरह बन रहा है, लव ट्रायंगल। ठीक है, वो अपने को पता चलेगा। हाँ, सिटी के बारे में और पूछ लेते हैं, हमने वो सिटी देखी थी। I saw a city. The submerged city of an ancient race full of treasure and monsters. Now fish people live there. I fear them, but the one sitting by the statue of the lady seems jolly. I'm losing track. And I sometimes take fish to the sick and poor elves when the Fisher King catches them. And on the island you can meet the lady, more beautiful than Alina. She yearns too. I'm completely lost. Stupid adults. How can you take care of us when you don't understand and you're always yearning? ऑलराइट, तो उसने बताया कि यहाँ पे कुछ लेडी लेक वगैरह है, कुछ लेडी ऑफ द लेक है, जिसके पास आप जा भी सकते हैं और उससे बात वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेडी ऑफ द गॉड एक टाइप की गॉड है इनके लिए। ठीक है, और कुछ पूछते हैं। डू यू नो हु आई एम? Do you know who I am? You have white hair, like every grandpa. You're ugly, but I like you. That's lucky. I know everything.
ठीक है. Is the shore Is the safe? shore safe? Yes, sometimes those evil fish people creep out of the water and drive off the funny fishermen. I hide under the fisherman's hut. Clever. Of course. Take care. All right. तो इस जगह का नाम है शोर. Stupid game. और यहाँ पे क्या क्या है ये कौन है? नायाद. इससे बात करें क्या जाके? हेलो. Welcome, warrior. Greetings. If not for my woes, I'd rejoice in a swim with you. What ये- concerns you? ये मॉरियन जैसी Let's लग रही talk. ना. ये भी ड्रूइड से एक हिसाब से. ये हुआ Who ये. are you? A naiad, a water nymph. I serve the Lady of the Lake. तो वही मैं कह रहा था, ये लेडी ऑफ द लेक को बहुत मानते हैं. You mentioned woes. Terrible indeed. I lost my turquoise necklace as I swam in moonlight, a gift from the Lady of the Lake. Where did you swim? I usually bathe in the lake, yet that night I dared the river near the village. Sadly, the drowners abide there, led by Zephyr, Who's Zephyr? once one of Vizima's most famous thieves. He moved as quietly as the wind, and quite handsome. And now? He once escaped through the sewers, but his loot proved too heavy. He joined the drowned dead, but old habits rarely die as easily. He still steals? Of course. Doubtless he stole my necklace. The drowners ever protect him. I'll search for your necklace. How wonderful! I have no gold with which to pay, but perhaps some trinkets could prove useful. It's a deal then. I shall await you at the end of the beach, in an enchanting lagoon. ओ तो इसका नेकलेस खुल गया है. कोई जफायर नाम के ड्रोनर वगैरह ने ले लिया है. ठीक है, तो हमें बुलाना है. इससे पूछ लेते कि जफायर कहाँ है. Let's talk. हाउ डू आई फाइंड ड्रोनर प्रोटेक्टिंग Where जफायर? do I find the drowners protecting Zephyr? They gather at night here on the shore. If you borrow a boat, you may reach the island where you'll find others. Some linger near the village. Farewell. ठीक है, तो इसने बोला है कि कुछ यहाँ पे विलेज के हैं. तो यहाँ पे आप देखो तो एक क्विस्ट खुल भी गया है. कौन सा क्विस्ट है? ऑब्वियसली साइड क्विस्ट ही होगा. हाँ, कहाँ गया? ओल्ड हैव इट डाई हार्ड करके. तो इसने बोला है कि कुछ यहीं पे हैं, कुछ आइलैंड से हमें बोट लेके जानी पड़ेगी. तो देखते हैं, हम तो मैप को फॉलो करते करते चलते हैं. सो आई थिंक वो रहे ड्रोनर्स. तो मैं सबसे पहले तो अपनी सिल्वर स्वॉर्ड और ग्रुप स्टाइल यूज़ करूँगा. आई थिंक इसमें एक ही बार में मर तो जाना चाहिए. इन सबको साथ में ही आने दो. आ जाओ भाई. हेलो ड्रोनर्स. ये हेल्प भी मारेगा ना हमारे साथ. ये लोग आइए और बचाए. ये हेल्प को क्यों मार रहा है बेचारे को? इधर लड़ना मेरे से. ठीक है, आई थिंक सभी मर गए. और राइट, तो अब हमें ब्लैकटन आइलैंड पे जाना है. वहाँ पे हमें और ड्रोनर्स मिलेंगे. ठीक है, तो आई थिंक हमें बोट से जाना पड़ेगी. बोट कहाँ है वो अभी देखते हैं. खैर अभी जितना भी रिमेन इनका ले लेते. ऑलराइट गाइस, तो वोट वो रही. तो उसकी इस्तेमाल करने के लिए यार हमें इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. अभी मैं वहाँ पे गया था तो चलो इससे परमिशन ले लेते पहले यहाँ से जाके. ऑलराइट, तो गाइस ये रहा हमारा फिशर किंग. चलो इससे बात करते. Greetings. You're the Fisher King, right? Well, I have a professional interest in the area. You see, I'm a witcher. Any monsters in the lake? Amphisbaenas? Dragonflies? Water creepers? No. I see. The lake's safe. While we're talking. चलो, ये तो नींद में लग रहा है मेरे को. और विचर से हूँ कर रहा है. विचर की हूँ तो आप फिर बहुत फेमस ही है. चलो इससे पूछते हो बोट के बारे में. Could I use your boat? Take care. चलो भाई, इसने परमिशन दे दी. तो बिना परमिशन के विचर काम नहीं करते. ठीक है, परमिशन लेते हैं भाई बाकायदा इज्जत से. गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के आए, वो भी परमिशन लेने ज़रूरी है. और राइट, तो ये रही हमारी बोट. चलो चलते.
ऑलराइट, तो हम ब्लैक टन आइलैंड पे पहुंच तो गए हैं। ये क्या है? और ये तो फायर प्लेस है। मैं भी कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। तो वो रहा हमारा ड्रोनर्स का दूसरा ग्रुप। ऑलराइट, तो इनको यहीं लेके आना है क्या? वहीं जाना है अपने को? आ जाओ, इधर ही है। तुम उधर ही जाना है मतलब अपने को। आराम से आओ, तुमको आराम से मारेंगे भाई। एक साथ आओ। और चलो ठीक है, ये मर गए। इनसे रिमेन्स कलेक्ट करते क्या? चलो, जो भी रिमेन्स था वो कलेक्ट तो कर लिया है। यहाँ पे लेडी ऑफ द लेक भी है। इससे कुछ बात करना है क्या? क्या पता भाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ नए से क्रिएचर आए हैं। इनको अपन वेट अ सेकंड, इसको निकालो। फास्ट स्टाइल से मारते। बेलिस्क नाम है इनका। मे भी इनके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो, नोटिस बोर्ड पे लगे हों। ऑलराइट, तो एक तो मर गया। कुछ रिमेन्स छोड़ दें कि ऐसे ही बस? बैलिस्टिक हाइट करके कुछ है। इन्वेंट्री फुल है लेकिन अपनी, तो क्या करते हैं? यह क्या है? कुछ फेंकना पड़ेगा। ब्लूबेरीज फेंक खा लेते। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने 3 तो मार दिए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे 1-2 और बचे हैं। ये लेडी ऑफ द लेक से क्या बात करें यार? कुछ मेरे हिसाब से इससे बात करूँगा ना तो कोई क्वेस्ट वगैरह खुल जाएगा। तो अभी तो रहने ही दो। वैसे भी अभी तो बहुत वो है, अपने पास टाइम है। बाकी ये आखिरी और बचा है। ठीक है, सब मार दिए। ये क्या है? चलो, ये किसी प्रकार की पावर है। ट्रंक में कुछ है क्या? ये अपनी मून रून है। चलो, मून रून ले लेते। ये सैलामांडर बुझ फेंको, इसको लो। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे? एक और ट्रंक है। इसमें क्या है? इसमें फ्लिंट है, गटर फेस, शूट, ग्रीस वगैरह है। फालतू चीज़ें हैं, ये नहीं चाहिए अपने को। इस आइलैंड को पूरा देख ही लेते, फिर अपन पता नहीं आ भी रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। खैर मेरे हिसाब से तो यहाँ और कुछ नहीं होगा। छोटा आइलैंड है फिर भी, लेकिन देख लेते अपना क्या जा रहा है। ओके, एक रॉयल वेरन है भी है। ठीक है, इसके पास भी कुछ रिमेन है क्या? वायरन मीट है और वायरन एग है। चलो, नहीं ले सकते क्या? नहीं, एग तो ले सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें। बाकी अल्टर ऑफ ड्रैगन करके कुछ है और एक क्रेट है बस। क्रेट में क्या? वाटरमेलन और बेवकूफ। चलो ठीक है, चलते। और क्या, अब यहाँ से सीधा वो ड्रोनर्स को मारते। तो वो रही अपनी वोट। चलो, इसको लेके और जल्दी जल्दी चलते। लेट्स गो। ऑलराइट, तो आखिरी अब कौन सी टुकड़ी बची है? पासेज ऑफ मर्की वाटर्स में है कोई आखिरी टुकड़ी ड्रोनर्स की। तो चलो, उसको भी मार देते हैं। मर्की वाटर्स वैसे भी अभी अपन गए नहीं हैं। तो जैसा कि उस लड़की ने बताया था, यहाँ पर 4 जगह हैं। आइलैंड है और एक मेल, ये क्या पता क्या है। एक मर्की वाटर है और एक फील्ड है। ठीक है, तो ये 4 जगह ही हैं। ऑलराइट, तो ये रहा हम रोड टू मर्की वाटर्स। और डैंडलाइन ये मिल गया। How did you get here? By teleport. Triss teleported me too. It was amazing. I always wanted to see what it's like. She did that for you? Must be having an off day. So why did Triss teleport you here? Let's say she saved me from the kiss of death. Interesting. Perhaps I'll use it in my new ballad. In any case, what a truly delightful place. Triss said we should stay here until Princess Adda stops dreaming of slitting your throat. I have to agree. So, tell me about this place. In prose, if you don't mind. It's a charming area, thoroughly magical in its mood. The peasants seem altogether happy, while the peasant women are, डैंडलाइन नहीं मानेगा। Dandelion. Something specific? Well, there's going to be a wedding. Alina, the village mayor's daughter, will marry Julian, a wealthy merchant from Kovir. Then there are the Vodia nobles. वेडिंग की बहुत बात हो रही। Alina's taking कुछ care of बहुत Alvin. इम्पोर्टेंट है कि Our ये। Alvin? Well, yes, unless he has a twin. Dandelion. Yes. Oh, I just remembered. Triss said you should watch him since others are after him. Or something like that. Anything else? I don't think so. Now to the tavern to meet some charming lass who'll get my spirits up. ऑलराइट, तो इसको भी ट्रिस ने टेलीपोर्ट कर दिया है और एल्विन को भी टेलीपोर्ट कर दिया। तो एल्विन का ख्याल वो लड़की रख रही है जिसकी शादी होने वाली है, एलिना।
और उसकी जो बहन है सेलिना जिसकी शादी नहीं होने वाली। तो बहुत मतलब ये आई थिंक ये चैप्टर 4 इस शादी के अराउंड ही घूमेगा। खैर हाँ, ये कहाँ है? ये आई थिंक इन है इसकी। इन में जा सकते हैं हम या जा तो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? हीलर्स हट। अभी तो पहले तो इनमें चलते, इनमें बहुत ज़रूरी काम है और उसके बाद वो ड्रोनर्स को भी मारना है अपने को। ऑलराइट, तो ये रही अपनी इनकीपर्स रहे। इस बार दो इनकीपर है। ऑलराइट, इससे बाद में बात करेंगे, अभी तो इससे बात करनी इनकीपर से। ठीक है, तो इससे क्या पूछते? एनीथिंग वन थिंग। तेरा वो बता हमको। ऑलराइट, तो ठीक है, थोड़ी सी इन्वेंटरी अपन ने खाली करा दी। अब इससे कुछ और भी पूछ लें क्या? वैसे भी यार अपन साइड मिशन ही करेंगे आई थिंक इस एपिसोड में। ठीक है, हेलो, वेयर इज द विलेज मेयर? Where's the village mayor? There's a large hut in the village where the mayor spends his time, but he lives in another large hut, so... I'll find it. ठीक How है, can I एनीथिंग help? इंटरेस्टिंग है? Any interesting news? Oh, wedding, that's what. The mayor's daughter, Elena, is marrying a townsman called Julian. He's staying here at my inn. ठीक है, तो वेडिंग ही आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है चैप्टर 4 का। इतने लोगों ने जिक्र कर दिया तो अपन समझ ही जाते हैं। One thing. Yes? You must know interesting stories. You must know some interesting stories. Sure, I'm an innkeeper. Long ago, in a valley far away, lived a girl. She was a true princess, sorceress, and witcheress. All three? Isn't that a bit much? Don't interrupt. You want to hear the story or not? ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा है। कोई एक लड़की थी, वो सॉसरेस भी थी, प्रिंसेस भी थी और विचर भी थी। तो आई थिंक ये सिरी की कहानी सुना रहा है। ठीक है, इससे सुनते भाई। और I won't interrupt again. A story about destiny might prove useful, Witcher. She was born a princess who wanted for nothing, had loving parents and a grandmother who was a great queen. She lived in palaces guarded by hundreds of knights. Everyone thought she'd become a powerful queen, but fate had other plans. Her parents died. Enemies butchered her grandmother and took the kingdom. Still, the princess survived. Her fate became bound to one particular witcher. She gained a new family at Kaer Morhen, the hold of the witchers. She learned to fight, yet destiny once again made noise. The lass had magical talent. She was a source. The witchers feared the uncontrolled power of a source and needed a sorceress to assist them. She studied arcane magic. The sorceress loved a witcher, and the two adopted the girl. She was truly happy and could have become a powerful sorceress. But war broke out and fate separated the family. Aggrieved, the lass disavowed magic and became a huntress, learning to love killing. Death followed her. Everyone she'd loved had died. Only the witcher and the sorceress denied death's calling. Fate cast her to foreign shores, yet she returned. The worst assassin tailed her, yet she emerged victorious. Agents of all kingdoms pursued her, yet none caught her. When she killed all her enemies and peace descended upon the world, she rejoined the witcher and sorceress, only to have destiny sneer at her again. What happened? A peasant, unskilled in arms, killed the witcher. The sorceress died trying to revive him. The girl could do nothing, for she disavowed magic. So the princess who would not rule, the witcheress who fought humans, and the sorceress who cast no spells used her power as a means to leave this world. I sense you haven't told all. All but one. Her name Yeah. was Cyrilla. What's that तो ये matter? मैं कह रहा था भाई, इसने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई है। अभी तक विचर की गेम के पहले की जो भी टाइमलाइन थी ना, विचर के साथ क्या क्या हुआ, सिरी वगैरह एनीफर, अगर आपने विचर का सीज़न 1 देखा होगा तो आप समझ रहे होगे। ठीक, तो ये विचर की कहानी थी और वो सिरी की बात कर रहा था। सिरीला ही उसका पूरा नाम है। तो या
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो थी। ठीक है, इससे और कुछ बात करें क्या? You look sad. Can I help? Perhaps. Crooked Lou and Bucktooth Bow stole a case of best firewater. Return it, and a useful artifact is yours. What artifact? It was a jest. Not funny. Your question reminded me of some old games. I couldn't resist. No matter. How can I help? ठीक है, और कुछ नहीं इसके पास। ठीक है, तो अब ड्रोनर्स को मारने चलते। आई थिंक यहीं कहीं में मिल जाएंगे वो। मार्की वॉटर्स ही तो बोल रहे थे वो। ऑलराइट, वो रहा है ड्रोनर्स। अच्छा, तो हमें इस ड्रोनर को मारना था, ज़ेफायर नाम का। लोग जब बाहर निकल तो पानी में नहीं मरते ये लोग। ठीक है, तो ये मिशन हो गया। अब इससे नेकलेस लेना है अपने को। चलो ठीक है, और चलते। ये कोई मॉन्स्टर है यार, एक कोई सामने ये। चलो, तो इससे लड़ने में नहीं लग रहा है अपन। चलते अपन तो अपना काम करते। तो उधर जाने से पहले दोस्तों, यहाँ पे कोई बॉडी का प्रिस्ट भी है। ये शायद हमें कुछ मिशन वगैरह देखते हैं। हेलो, Gul pal tal hol. Oh, gralol. And I'm Geralt. Pleased to meet you. Dul pol grol. I don't speak your language. Dalol, your language I speak very well. Evidently. Let's talk. Kneel before lady. Speak easy. No kneel. Must be dagonan and battle. No speak. So I'm to pay tribute to the Lady of the Lake? Exact. ऑलराइट, तो हमें ट्रिब्यूट करना होगा। चलो ठीक है। All right. Oak. Gul pul tal hol. Okay, got any work for skilled with a sword? Got any work for someone skilled with a sword? Gul, bull. Humans great enemies to Vodianoi. Hire Witcher big for Vodianoi to kill. Witcher big at crypt. We love wish humans, yet humans swim our waters. Did I hear you right? Another Witcher? Gralol, exact. Disloving ghouls at crypt. I need to speak to him. Farewell. ऑलराइट। तो देखो अभी क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। तो इसने इनकी और ह्यूमंस की लड़ाई चलती रहती, ह्यूमंस है ही ऐसे। ठीक है, तो इसने एक विचर को हायर किया था कुछ क्रिप्ट में कुछ मॉन्स्टर वगैरह मारने के लिए। आई डोंट नो किसके लिए। तो वो विचर आई थिंक बेरेंगर हो सकता है, तो हमें शायद वो मिलेगा वहीं पे। और इससे और पूछते क्या। ठीक है। Everything all right? Great sadness. No peace in house. I'm sorry to hear that. Oak. Gulpul tal hol. What's Witcher in your language? Which malol bull? Witch Malol? Which malol bull? Bull must be. No, bull means idiot. All right, then I'm Witch Malol Bool. Yes. ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मेन मिशन खुला है रिपल्स करके। रिपल्स और एलिमिनेट अभी 2 मिशन है। तो आई मस हमें क्रिप्ट में जाना होगा उस पिक्चर की तलाश में। खैर वो तो अभी हम कर ही रहे हैं। अभी हम ये वाला मिशन कर ही लेते पूरा, जब हम यहाँ आ गए हैं। तो जिस वजह से हमको नेकलेस देना है और पूरा मिशन हो चुका है अपना। तो कहाँ गई वो क्या नाम था उसका, ड्रूइड कहाँ गई वो वाली? वो यहीं कहीं मिलेगी हमें। वो रही याद। I have your necklace. Splendid. Now your reward. I'll grant you a book on the Vodianoi. The Earth Rune
or I'll treat your wounds whenever you need. ओके, तो क्या लेनी चाहिए हमको? या बुक ऑफ बेडनॉइड ये सब लेना चाहिए, या फिर आर्थरियन लेनी चाहिए, या फिर आई ट्रीट यू वाला लेना चाहिए? देखो ये बुक मुक्त अपने काम की है नहीं, तो रही बात आर्थरियन और उसकी, तो आई टेक द आर्थर. I'd like the Earth Rune. The Earth Rune. A gift for a true warrior. Thank you. Take this token as a memento. The amulet will protect you from drowners. ठीक है, तो उसने हमें एक आर्थरियन दे दी, ये रही, और एक अपने पास एक सन रून भी है, एक सैंडी और चाहिए. ये क्या है? रेड रिबन है, ड्रोनर रिपेलिंग टेल. ठीक है, तो एक अपने पास एक है ही, इसको बेच देंगे. ठीक है, चलो. तो अब अपने को क्रिप्ट में जाना है, उसी बिचर की तलाश में. सबसे पहले मैं उसे ट्रैक कर लेता हूँ रिपल्स करके. ओके, यहीं जाना है, क्रिप्ट पास में ही है. चलो ठीक है, लेकिन दोस्तों क्रिप्ट में जाने से पहले यहाँ पे एल्फ वगैरह भी हैं, इनसे कुछ बात वगैरह करके देखते क्या. कुछ है तो नहीं वैसे यहाँ पे. अब एल्फ ये क्या है? केव है क्या जिसमें कौन रहता है? ओके, तो इस केव में एल्फ्स रहती हैं, और एल्फ का पूरा वो है, एल्फ वूमेन है यहाँ पे. When will this end? एल्फ क्राफ्ट्समैन. ये कौन है? ये कौन है? एल्फ वूमेन. Begone, Dwan. और ये तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रही. इससे बात करें क्या? Geralt, I'm not surprised to see you. It's me, Sheridan. Recognize me? Sheridan? Apparently not. You were busy. It's been some time. True, Geralt. And see what's come of it. A mess, not assimilation. You work hard, you pay taxes, then come the pogroms. You flee as they torch your tavern. Hard times. Good you're here. Why are you here? Same as the rest, eating berries and dreaming of my place on Earth. Try doing something else. Guerrilla warfare can be dangerous. I've survived that. Humans prevented me from living as I wished to. Disdainful times. More bad luck round the corner. Need help? No charity, please. I see. Care to play dice? Why not? Got nothing to lose. ऑलराइट, तो आई थिंक इसके साथ हम डाइस खेल सकते हैं. बढ़िया यार. चलो, वैसे भी ये साइड मिशन का ही है भाई, ये वाला पूरा एपिसोड. मेन मिशन है मतलब इसमें भी, लेकिन पूरा एंजॉय करो ना भाई गेम को, अब कर रहे हो तो. ऑलराइट, तो हमारे पास 266 आए हैं, हम थोड़ा बढ़ा ही देते हैं इसको, और इसको और इसको. उसके पास क्या है? 6 हैं और एक 4 है, तो हमारे पास 3 6 आ गए. ठीक है, तो हम जीत गए आई थिंक. ऑलराइट, जीत गए. नेक्स्ट राउंड, और थोड़ी देर रुकने के बाद अब रोल करो डाइस को. 1 3 3 आया है, और चलो चलो, तो हमारे पास 2 पैर बन चुके हैं. ठीक है, बढ़िया है. आई थिंक ये वाला भी जीत गए हम. चलो, और कुछ है क्या? और किसी से बात कर सकते क्या? एल्डर क्राफ्ट्समैन इससे. Kedmil Vatgern. Greetings. Who are you? When the chaos of war surrounds us, few care for beauty and harmony. I ensure that beauty remains in the world. I create customized objects. You're a craftsman? Craftsmen produce useful items. The beauty of my works could awaken the dead. There are quite a number of you here. We escaped from Vizima. The wounded and sick lie in the cave. If you like, speak with our leader. Turuviel से बात Any करनी है trouble हमको. from the inhabitants here? The Lady of the Lake reigns in this land. We're safe here, though I have heard of conflict with the Vodianoi. The Lady of the Lake? The goddess of this land. Listen to the bubbling waters, the whispering of the trees. Look at the waving grains, the smiling people. You'll sense it too. I think I get it. You'll understand when you meet her. Farewell. ठीक है, तो हमें इससे बात करनी है. Greetings, Geralt. Greetings, Elf. Have you forgotten me? Much time has passed since our encounter at the end of the world. I lost my memory. No तो ये अपने matter. को जानती. I am called Teruviel,
and I am pleased to find you again. Me too. What brings you here? You mentioned we meet. You mentioned we met. In Dol Blatana, the Valley of the Flowers. A most beautiful place. I granted Dandelion the lute he now plays. Meeting you changed me. I once hated humans without exception. Your words planted doubt. When the war brought all that hatred, I realized there was another way. I'm glad. As am I, Witcher. Is there any way I can help? Indeed. We're wounded and hungry. Negotiations with the peasants went poorly. Our dignity is all we have left. What can I do? You could buy fresh bread. 20 orange should cover 5 loaves. I'll return ठीक है, तो हमें इसके लिए ब्रेड लेके आने और कुछ नहीं. और I cannot wait to fight. ठीक है, तो जब हम जाएंगे तो ले आएंगे. ठीक है, यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं? तो अपने पास अभी एक ही ब्रेड है, तो 4 और ख़रीदने या फिर लेने कहीं से भी. हम वेट्रेस से ही मिल जाएंगे जब हम जाएंगे तो. ठीक है, तो ये इस मिशन का नाम क्या है वो और देख लेते हैं. डेली ब्रेड नाम है इसका. छोटा सा साइड मिशन ही है. ऑल राइट दोस्तों, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर केव में और पहले दिन फील्डर्स को मारना पड़ेगा. आ रहे हैं तो इनको तो अपन ने मार दिया. इसका रेमेंस और लूटते और जल्दी जल्दी अंदर चलते. ओके, तो ये रहा बेरेंगर. I finally found him. Fucking witch's fate. What do you want, Witcher? I've been looking for you, Berenger, for some time. I have some questions. You mean you're not looking for that legendary suit of armor? Well, you'll have to wait, because a wraith and some Brookside will be here any minute. You think you can handle them? Think I can't? Fine. Play tough. As that old stooge Vesemir used to say, let's fight and see. I can hear them coming. Get ready. I've been ready since childhood. Those bastards at Kaer sorted that. ये तो वैसा मेरा वो सर विचर की पूरी वो कर रहा है. तो ही रुको एक सेकंड. तो ये कौन सी सॉर्ड अपनी विचर की सिल्वर सॉर्ड है. ऑलराइट बस इतना ही देख रहा था और कुछ नहीं. और इसने तो अबे ये तो बहुत बुरा मार रहा है. इनसे कैसे वेट अ सेकंड. एक सोलो पोशन लेने दो. मर गई के सब. Was that necessary? वैम्पायर से ही है. ब्रुक्साई. ऑलराइट, तो इनके पास क्या रिमेन है ऐसा. ये कुछ सॉल्ट्स वगैरह दे रहे हैं. और चलो एक सब ले लेते. और किससे बात करनी? बेरेंगर से बात करनी. और तो मैं देख ली मेरे पास कैट पोशन है क्या. ठीक है, तो मैंने एक वो पॉइजन वाला वो लगा दिया. हैंगर्समैन्स वेनम्स ब्लड. बेरेंगर वो रहा, इससे बात करनी. Nice style, but not perfect. During a half pirouette, you leave your groin unprotected. I don't think so. I'll demonstrate when we get out of here. I don't intend to discuss swordplay. What do you know about Salamandra? Straight to the point. Know why I'm laughing, Geralt? No. I'm laughing at you. So witchily, fast, deadly, and sure of yourself, with your unwavering sense of what's right. Think you're better than me? I don't know, but I don't want to fight you. Oh, that's right. The code forbids it. Watch it. Here they come again. All right, तो और आ गई है. एक ही बार में मर गई ये वाला. ये तो बहुत काम का निकला आपने.
That was easy enough. Berenger, I'm not about to get killed by a few Bruxae, if that's what you were hoping for. Let's talk. Who said I wanted to talk? You gonna force me? I hadn't intended to. I was thinking. That since we're both Witchers, somehow we'd come to an agreement? To me, you're no better than that scoundrel the professor. You're just a bigger hypocrite. So you worked with Salamandra after all? I never said that. Shit. और कोई आ रहा है क्या? रुको रुको, ये क्या है? पीस ऑफ आर्मर, ये ले लेते अपन। और यहाँ पे क्या है? सल्फर डस्ट, ओके, रेट्स वगैरह हैं। और मर गए सब। चलो ठीक है। Looks like we're done here. Can we talk? Fine, but not here. Let's go outside. Sit by my fire. Finally. All right, चलो अब इससे बात करनी है अपने को, बेरेंगार से। लेकिन इससे पहले ये रिमेन्स तो कलेक्ट कर लें। फाइनली अपने को लगा था बेरेंगार मर चुका है, मगर वो तो जिंदा है। यही तो बेचारे भाई, ट्विस्ट वगैरह अच्छे हैं इसमें। और इसमें क्या क्या है? एक ट्रंक है, इसमें कुछ खास नहीं। चलो ठीक है, बाहर चलते। All right, what's so urgent? I'd best start at the beginning. What's your connection to Salamandra? What the hell? It's a simple story. They found me some time ago and the professor made me an offer I couldn't refuse. You know the kind. Help us or we'll feed you your balls. I did what I had to do. It's funny. They remind me of Witchers. Never had a choice, with them or you. The Witchers made me a mutant. The professor made me a criminal. An outcast twice over. I escaped as soon as I could. They got nothing out of me. I didn't sell anyone out. And then I came here. ठीक है, तो सैलेमेंडास के लिए काम कर रहा था अपनी मर्जी से। ठीक है, ऑब्वियसली आर्य धोखा दे रहा है विचर बिरादरी को। I heard you're attempting to resolve the conflict between humans and the Vodyanoi. What? Did they send you here to dissolve my contract? Fine by me. Take it. What contract? The one negotiating a peace between humans and the Vodyanoi. Both sides came to me. I have no intention of pursuing it, and the job will fit your sainted legend perfectly. Do I sense envy? Don't flatter yourself. I have only contempt for people like you. Don't digress. My take? Cull one of the two sides, and the rest will fall into place. अभी ये तो बहुत ज़्यादा वैसा अलग इंसान निकला है यार, ये तो बहुत एटीट्यूड में है। चलो सूट ऑफ आर्मर के बारे में पूछते हैं। You mentioned a suit of armor? You don't know the legend? I thought every little Witcher had heard it. Tell me. The legend, as legends do, tells of a great warrior. It's more boring than Dandelion's ballad about you, which is hardly possible. But it turns out our hero employed Witcher's fighting techniques while wearing armor. Was he a Witcher? Who knows? Sounds interesting. They called him Raven. He had connections to gnome inventors with superior technical knowledge. In their secret workshops beneath Mount Carbon, they created a suit of armor both durable and light. Perfect for a Witcher. A legendary suit of armor. I should do some treasure hunting. Good luck. I suspect Raven was buried in it, and I have long scoured cemeteries in hopes of finding it. Know anyone who could tell me more about the armor? The local blacksmith is an inventor and knows the legend. You could also try the elven handyman. I'll do that. Yeah? ठीक है, तो एक आर्मर है बहुत तगड़ा, जो जिसके लिए तलाश कर रहा था, तो उसका छोटा सा पीस हमें भी मिला है। ऑलराइट, तो हमें बहुत अच्छा आर्मर भी मिलने वाला है अभी। ठीक है, और इससे पूछेंगे। Know where I can find the friendly Vodian priest? By the Lady of the Lake's altar on the shore. Sometimes the dragon worshippers drive him away, so wait for him, if it's not beneath you. I see. Yeah? You mentioned an imperfection in my defense. Yes. You leave your groin open when you do a half spin. A beginner would notice. I even know why. Care to tell me? To do a half spin correctly, you need to have both legs in working order. One of yours was crushed once. Possibly. So it goes. Live by the sword, die by the sword. ठीक है, ठीक है। All right. Farewell. ठीक है, तो बेरेंगार
आखिरकार चलो जिंदा है अपने लिए, वही अच्छी बात है। और एक साइड मिशन खुल गया है, पाथ ऑफ डेस्टिनी, ये देखो। और देखो आप यहाँ पे अच्छा खासा, और एक और बड़ा मिशन भी खुला है आर्मर करके, ये वही आर्मर वाला है। रिपल्स में हमें करना क्या है, जूलियन और बॉडियान ट्रिस्ट से बात करनी, प्रीस्ट से, ठीक है, तो वो अपन कर लेंगे। और अभी अपने को जाने कहाँ है, मर की वाटर से जाना है, वहीं पे अपने को जूलियन और बॉडियान प्रीस्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो ये अपन जो मेन मिशन है ना, ये अपन बाद में कर लेंगे। अभी अपने को मैंने क्या ये वाले ये सब फिस्ट फाइट है ये सब, ठीक है। तो चलते यार, अभी मेडिटेट कर लेते। तो या मैं यही कह रहा था कि ये अपने मिशन से अपन बाद में कर लेंगे। यहाँ पर अपने को ये भी मिल चुकी है, ये भी उठा लेते हैं नोटिस, ठीक है। तो डेडलाइन से बात करें क्या? हाय Geralt? What happened in Vizima after I disappeared? Who knows? I left soon after you. Though I did hear that you staged quite a bloodbath. Sometimes killing is necessary. Now don't get offended, but has killing people become a pleasure for you? No, I have nothing against slaying humans. I only kill I only humans. kill humans in self-defense. Like the old days. Try as we might, we just can't seem to cull the population of vicious SOBs. I sense we haven't seen the worst of them yet. Be careful. I will. Geralt? How do you like the country? How do you like the country? It's wonderful. Wine, women, song and dice through the night. Dice? I've played. Didn't think the game was popular in the provinces. People here go wild for it. It's incredible. I'm practically a professional. Geralt, not to disappoint you, but you need to practice before you're anywhere near my level. Try me. Come on, you're like a brother. I wouldn't have the heart to skin you. Come see me when you've gotten some practice. Start with Tobias Hoffman or Julian. मेरे साथ भाई क्यों नहीं खेल रहा बे तू? It's wonderful. Try me when I'm. हाँ, मेरे साथ डाइस खेल भाई, मैं सार पर हूँ। ऑलराइट, 390 जीत गए हम, अपन जीत गए। हाँ, इसी से बात करनी है अपने को। Two innkeepers. Mama and Papa own the inn. Mama won't let me speak to strangers. As a waitress, you have to talk to strangers. Not true. Only regulars visit our inn. Got you there. I'm a stranger. You're Geralt of Rivia. Master Dandelion sang a ballad about you, so I know you. Got me there. How can I help? ये ब्रेड नहीं रखी क्या? चलो इससे अपने को फाइट और करनी। And Gablada. I'm looking for a worthy opponent. Then welcome. They call me The Rock. Sounds ominous. Want to fight a real champion? What's the wager? 500 orins. तो हम रॉक से लड़ने वाले हैं, चलो ठीक है। I'm in. I'm itching to hit someone. No challengers? No challengers? Congratulations, champ. Before you collect your reward, know another fight awaits. Who with? Go to the swamp, where you'll meet the Nameless One. Choose your reward. I'll take the best of all runes. Here. Waste of words. इसने अपने को मून रूइन दी। जूलियन से भी बात करते हैं। Greetings, Witcher. I've heard a lot of good things about your kind. That's rare. Usually people treat me like a leper. Not in my house.
When I was a child, I heard many tales of a witcher who saved my grandfather's life in exchange for a silver penny. That must have been a while back. I'm Geralt. Oh, yes, in the olden days. I'm Julian. It's a pleasure. इससे grandfather की story और सुन लेते. Tell me the story of your grandfather. Grandfather, may Melitele watch over his soul, had a plot of land. A piece of a rocky, frozen valley in northern Kovir, and a deserted coal mine with no coal. Grandfather always said that a treasure was concealed in the valley. He worked hard every year to discover that treasure. Initially, many gladly took the jobs he offered and helped. But soon it became clear that Grandfather had gone mad, that there was no treasure. When he was 47, had rheumatism and a collection of bobolak scalps above his mantle, he was overcome with grief and went outside. He began cursing the heavens, berating all the known gods in the foulest language he knew. The gods answered. There was a terrible rumble, and an avalanche descended on the valley. Grandfather regained consciousness, burrowed out of the snow, and looked around to see something that would change his life. The entire valley was glimmering strangely, glimmering so beautifully that he nearly didn't see the beast coming towards him with a heavy gait. Grandfather fled, bending over once to pick up a strangely glimmering stone. In short, he escaped. Descending from the mountains, he encountered a witcher who agreed to slay the monster in exchange for a silver penny. They returned to the valley, and the witcher slew the beast. He could not help noticing the wealth laying in that valley, yet he demanded nothing beyond the penny promised him earlier. Grandfather grew to trust him and knew that sooner or later someone or something would come along and want to take his treasure, for the treasure in the valley was immense, Geralt. Diamond deposits that took years to extract. They became partners. The witcher watched the workers, killed monsters, drove off bandits, and Grandfather managed the business. He's a legend in Kovir, and my family is wealthy and respected. That's the whole story. चलो इससे और बोलते थे. I've taken Berenger's job. Decided to handle this problem myself. Listen, I'm in the middle of planning my wedding. You have no idea how much time it takes. Come back later. They think of nothing but... All right, तो यहाँ पे Abigail है, ये देखो. Greetings again, Geralt. Greetings, Abigail. You found a new home. I was welcomed with open arms. Their own healer died last winter. If you like, I'll betray to you their greatest secret. You haven't changed a bit. I've developed a special ointment, drawing on the old healer's recipe. It makes their cow's coat shine. In truth, I have changed. What brings you here? For I cannot believe you missed me. Why don't you live in the village? Witches live outside villages, as they always have. You must accept that. Abigail, remember the cave? The past is past, nothing more. All right, चलते हैं अपन. Village area भी देख लेते. All right, तो ये रहा बेकर, इससे अपने को bread लेने. You followed the aroma of my fresh bread? You could say that. All my goods contain finest flour and a secret ingredient from a grateful nymph. I need something. How may I help? कहाँ गया bread? ये रहा bread. चलो 1 2 3 4. All right. और बात करें क्या इससे? Have any other secret ingredients? Sadly, though I know one recipe. What's that? Can't say. I would need white. तो इसको white honey चाहिए. ये क्या है मेरे पास? Honeycomb है. I'm about to get angry. नहीं दे रहे, चलो रहने दो इसको. Alright guys, तो हमें सेलिना से मिलना है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों. इसकी सिस्टर के बारे में बात करना है. Is your sister happy about getting married? She's happy. She has no concern for her younger sister. Elena doesn't deserve happiness. Oh, how I hate that nymphette. Now she's ensnared Julian, a wealthy town merchant, while she wanders about with her nose in the clouds. Don't worry.
You'll find a good husband. Better than Julian? Not, woe, I suffer for the masses, Adam? How pathetic. Or perhaps you mean the hermit? Such are my options. Did you see the engagement ring Julian gave Alina? A diamond larger than a pigeon's egg. Calm yourself. Why take her side? Admit it, she's dazzled you. Oh, how I despise her. She'll not have you. I'll give myself to you right now on the nearest rock. You merely need to give me a nicer ring than the one Julian gave Alina. Okay, तो इसको एक रिंग देनी है. Show me. It must be more beautiful than Alina's engagement ring. तो हम इसे ये हाउस ऑफ द नाइट सिग्नेट रिंग दे देते. That's the ring? So be it. I'll show Alina I can have any man. But... Kiss me. All right. All right, तो हमारे पास अभी देखो तो एक है मून रून, एक है अर्थ रून, एक सन रून और चाहिए हमें. ठीक है. ओके, तो सन रून कैसे मिलेगी, इससे बात करते क्या? A customer. इसके पास भी अर्थ रून है, ये सन रून. 3 है तो तीनों ले लेते क्या? तीनों ले लेते. एक अर्थ रून भी ले लेते. और उसके अलावा ये क्या है? रेड मीटराइट, ब्लू मीटराइट. ये कुछ और भी हैं, टेम्परेरी वाली हैं. ठीक है, तो इनका हमें कुछ नहीं करना. ब्लैकस्मिथ सन, हेलो. A customer. Why so surprised? Rarely do any buy arms in murky waters. I'm no salesman like my father. Your father? My father told me to sell arms. But if no one buys... Oh, but better not to argue with father. Maybe he wanted you busy. Perhaps. I'm to sit quiet and sell to those who want to buy. ठीक है. हमें ब्लैक स्मिथ के पास जाना है बेसिकली. रुको. Greetings. Hello. How can I help the gentleman? Who might you be? Master Handyman at your service. I handle repairs of all kinds, produce strange and non-standard objects, and I'm a capable creative blacksmith and carpenter. इससे उसके बारे में पूछते, आर्मर के बारे में. Mentioned you know the legend of Raven. I know nothing about the legend. I'm more interested in technology. That armor was a breakthrough in armor design, made possible by advances in metallurgy and smelting. Very interesting. About the armor. I can tell you about its qualities. Good, but remember I know little about metallurgy or smithery. 3 elements remain of Raven's armor: a spalder, a rear brace, and a gauntlet. The highest quality iron ores and state-of-the-art technologies were used in its making, not some useless Temerian smelting pots. The gnomes surpass us technologically by an age. Beneath Mount Carbon, they have blast furnaces and quenching tanks, equipment beyond our reach. Can you tell me about the armor? As you wish. The technologies I mention allow for the production of steel both hard and flexible, essentially indestructible. As I said, only parts of the armor remain. To recreate the entire suit, you must find replacement material and someone to assemble the parts. Any suggestions? Search crypts where great knights were interred. I heard the counts of the Reuter dynasty wore similar armor. Pieces of that should be reforgeable. तो हमें कुछ रिपेयर करवा सकते हैं. हमारे पास देखो, वेट अ सेकंड, ये हमारे पास एक सन रून वगैरह सब कुछ है. ऑलराइट, तो हम ये बनवा लेते. कितने की भाई? ये 1600 की है. ऑलराइट, तो ये थोड़ी सी अपग्रेड हो गई. ब्लैक, इससे बात करते हैं. Greetings, what brings you here? A wonderful aroma. I'm cooking a traditional Temerian sauerkraut stew. Any work for me? If memory serves, a witcher is like a magical warrior. I slay monsters, drowners, kikimors. I'll doubtless need you sometime. Any work? Any work? Yes, I'm having terrible trouble with my husband. What happened? That old fool found himself a succubus. Thinks I can't hear them frolicking at night.
I'm to get rid of the succubus? I learned an old folk remedy from my mother. I'll need 9 handfuls of glimmering dust from the hair of noon wraiths in the fields. What about payment? I have this herb manual listing local herbs. Bring me dust to scare off the succubus and you'll have the book. ओके तो हमें कोई जॉब दे रही है जिसके बदले हमें बुक और कुछ और भी चीज I'll देगी। take the job. Deal. ठीक है, तो यहाँ पे एक अपना वो भी खुल गया है टेम्पटेशन करके। ये कौन ब्लैकस्मिथ है? You, sir, step here. What is it? I overheard you speaking with my wife. I have an offer for you. Not interested in partying with your charming demoness? My wife exaggerates about the frolicking. As a man, you understand innocent entertainment harms no one. What do you propose? A folk spell will put the succubus to sleep for a while. My wife will calm down, and afterwards, I can quietly awake the succubus. What do you need? 9 handfuls of shadow dust from devourers. They appear in the fields at night and are very dangerous. What will I get in exchange? I have red meteorite, which can improve your sword. Or perhaps you'd prefer gold. Say 500 orens? Okay, I'll help. I'll help. Not a word to my wife. टेम्पटेशन करके ये भी खुल गया। Hello. I saw a rusalka by the lake, but was puzzled to see her bleeding from the mouth. I asked Witcher Berenger about her. What did he say? She proved to be a bruxa in truth. How do you know what a bruxa is? My grandmother told me of vampires when I was young. Tell me. The bruxa is a vampire. A vampire almost as horrid as the Nosferatu. Quite attractive. Bruxae easily lead foolish boys astray. She has her way with them, then sucks their life away. Bruxae give you nightmares. Usually they remain silent, though they can scream terribly. Fortunately, they cannot stand garlic. Oh, they're rendered helpless when you cut off their heads. Thanks. I'll be sure to smack any bruxa I meet with garlic and decapitate her right away. I'm pleased to be of use. ऑलराइट, तो ब्रॉक्सा की एंट्री हुई है हमारे साथ। ऑलराइट, तो अभी अपन करते क्या है, वो ब्रेड देने चलते। यहीं से जाना है ना। ऑलराइट, इसी से बात करनी है। Yes? I bought bread. I bought bread. I'm pleased we didn't misplace our trust. Here, 5 loaves. I thank you. Moments like these make me think we can end this spiral of hatred and accept each other as we are. ऑलराइट, तो ये वाला मिशन भी हो गया। और इस गेम में देखें कि और कुछ है। Kate Mill, Gwynblade. I've brought food. What's that? I spit on your charity. Be reasonable. You need food. I want to help. Help? No. You want to demonstrate superiority by throwing food at me as if I were wild. Cease your patronizing human. I'm not patronizing you. When I went hungry, I received help from unexpected sources. I don't need your pity. You elves will never change. You ignore the obvious. A beggar, even when arrogant, remains unimpressive, even ridiculous. So, you've come to laugh, to marvel at freaks. Now I'm angry. You speak of anger. You. I would beat you so hard you'll remember me. You. Calm down. It'll be all right. यहाँ पे बस इतना ही है कि और कुछ है? ठीक है, यहाँ पे और कुछ है, देखते। चलो ठीक है, चलते। तो एक ये नया रीजन है फील्ड्स करके। यहाँ पे क्या है? कुछ होगा यहाँ पे। तो वेट अ सेकंड, जो ब्लैक स्मिथ ने अपने को वो क्वेस्ट दिया था, कहाँ गया? टेम्पटेशन करके। आई मुश्किल सेवर डिवोर्स एंड कलेक्ट द हैंडफुल ऑफ डस्ट। तो हमें शेडो डस्ट कलेक्ट करनी है, तो वो हमें यहीं मिलेगी आई थिंक। बगरपुर रात को मिलते हैं। चलो देखते हैं। अभी तो ये क्या है? क्रिप्ट है। ऑलराइट,
वहाँ पे 2 घर भी हैं। कोई रहता है क्या यहाँ पे? हर्मिट रहता है, हर्मिट। हर्मिट, उससे बात करे क्या? How can I help? ओके, हर्मिट ये डाइस भी खेलता है। हाँ, मगर इससे अपने को करना है। इसके वेयर्स देखते सबसे पहले तो। ओके, तो इसके पास बुक्स भी हैं, तो बुक्स अपन खरीद लेते। कौन कौन सी खरीदना है? एक अपने को वैम्पायर वाली खरीदना है और एक ये और खरीद लेते। ये पता नहीं क्या है, वेट अ सेकंड। तो अपने को ये बुक पढ़नी है, वैम्पायर वाली, और ये सब भी पढ़ लेने। आल्फ कॉन्ट्रैक्ट, बैलेसिक कॉन्ट्रैक्ट, वेविनेक कॉन्ट्रैक्ट, जाइंट सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट और डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट करके। तो इनमें से अपने को शायद कुछ हो भी गए होंगे। लेट्स सी। आल्फ कॉन्ट्रैक्ट, आई नीड टू ऑब्टेन 5 एल्फ फैंग्स फॉर अ विलेज। चलो ये अभी अपन कर लेंगे। आई शुड दी जूलियन एंड क्लेम माई रिपोर्ट। चलो ये वाला तो हो गया। डिवोर्स के टीथ लेने इसमें। इसमें 4 ये करना है। चलो तो अभी अपने पास कितना? 2 हो गए हैं। 1 2 3 4 बचे हुए हैं। ऑल राइट, चलो इससे और बात करते हैं अभी। How can I help? Anything a witcher can do for you? I do have a problem. How can I help? There's a druid's ring nearby with an ancient statue of the goddess. The place is saturated with the power and attracts dangerous entities. Not surprising. The wild hunt began haunting the ring recently. Its king hopes to lure the souls of the warriors laid in the kurgans by my hut. I have dealt with the hunt. What would you like me to do? Kill 9 phantoms, a hallowed number of the druids. Perhaps the appearance of a witcher will drive off the king of the hunt. As your reward, you may have a book on vampires, ownership of a hut, or a wreath of immortals. I can do that. Remember this. The king of the hunt is a powerful opponent, and no mortal, not even you, can hope to defeat him. So how do I fight him? Find mandrake root by the kurgans near my hut. The magic herb will keep the king of the hunt at bay. Merely light the candle that stands within the ring and sprinkle mandrake upon the flame. Yeah, that sounds helpful. तो इसने अपने को कोई नया क्वेश्चन दिया है और कहाँ यही जाना है अपने को। मैंड्रेक रूट यही लेनी है अपने को। 1 2 ये तो इजी लग रहा है। और पूछेंगे इससे। Can I ask you something? What is it? What do you know about the wild and what can a wraith of immortals do? What do you know about the wild hunt? It is a group of crazed spectres who traverse the heavens searching for souls like themselves. They are susceptible to magic, especially of the ritual kind. Can I ask you something? What is? Who lies beneath the kurgans I saw before your hermitage? Knights who died serving the lady over the ages. Gavender defended her honor against the Black Skull Knight. Elavera perished at the foot of her altar fighting a water beast. Boar's tomb is symbolic, for the knight was lost on a holy mission. The last is for Reynard, an ordinary innkeeper who stopped customers from pissing in the lake. Do you take care of kurgans? Do you take care of the kurgans? Indeed. That is how I serve the lady. Her power is strong near the kurgans. At night, sometimes, you can speak with the lady's champions. From them I draw wisdom and knowledge of past time. What can the wreath of immortals do? You might find it useful. एक मैंड्रेक रूट और ले लेते इससे। कितनी अपने पास? 5 ही तो, एक और ले लेते। यही जाना है अपने को। ड्रूइड सर्कल। ऑल राइट, तो हमें सबसे पहले तो रात ही करनी होगी।
Wait a second. को 1 साल पोर्शन पीने दो। और वो कौन सा पोर्शन बनाया था एक अपन ने? ये वाला। एक और वाला कौन सा था वो? चलो ठीक है। यही करना है अपने को। ऑलराइट, इनमें से मैंने कलेक्ट करें क्या? ऑलराइट, आई थिंक हो गया क्या मिशन? नाउ आई कैन सी द हेलमेट। ऑलराइट, हो गया। इजी तो था। यहाँ रहता है ना हरमित। हम इससे ये लेते हट। I wouldn't mind owning a hut. Here's the key to its door. Thank you. Please. ठीक है, चलो। बेचार का कोई घर तो हुआ एक हिसाब से, अच्छी बात है। ये क्या है? रेड टेल्स में द जायंट सेंटिफिक रिपेलिंग। ये सही चीज़ है, ये अच्छी चीज़ मिल गई। रिविया, इसमें क्या है? आफ्टर द वॉर द पीपल ऑफ रिविया वर अनहैप्पी। ये गेराल्ड के लिए अच्छी बुक थी, मतलब ये वाली। ये बॉम्ब बनाने की वो है। चलो यही ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये क्रिप्ट में देखते, क्रिप्ट में कुछ अच्छी चीज़ होगी। ये रही क्रिप्ट आई थिंक। ये क्या है? कैट हार्नेस, a small harness made up of sweat flake। अच्छा, मुझे 5 एल्फ को भी तो मारना है, मैं भूल ही गया था। अबे यहाँ पे कौन है? यूरस। ठीक है, सबको मार दिया। यूरस को चलक था। सिग्नेचर हेड। ऑलराइट, ये कौन है? ये अपन ने। हाँ, ये आल्फ मारनी है अपने को। आ जाओ जितनी आल्फ आना। तो आल्फ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया आई थिंक। एल्फ कॉन्ट्रैक्ट। अब अपने डिवॉयर और जाइंट ये बचा है। तो डिवॉयर के लिए कुछ ये कहाँ मिलते हैं यार? मुझे याद करना पड़ेगा। ये फील्ड्स में मिलते हैं, और ये जो जाइंट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रूइंस के पास मिलते हैं। तो ये 2 और बचे हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं अपन बाहर। ठीक है, यहाँ पे और देखते क्या क्या है फील्ड में। हमें इसी तरफ जाना है मेरी। अरे ये भी कोई ट्रॉफी थी, टाउस वाली। ओके, लेकिन अब अपने को मिल नहीं पाएगी, अपन ने उसको मार ही दिया। डिवोर्स टीथ मिल चुके हैं और शैडो डस्ट। ऑलराइट, तो मुझे करना क्या है अभी? रुको, हमें डिवोर्स के क्या चाहिए? 10 डिवोर्स टीथ। हाँ, टीथ ही चाहिए थे। तो 2 मार दिए। कितने हैं अपने पास? अभी 2 ही हैं, तो और मारने हैं। ठीक है, तो ये जगह मेरे को याद रखनी। ऑलराइट, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वाला ये मिशन था, डिवोर्स को मार देने वाला हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो कुछ डिवोर्स कितने हैं? 2 ही हैं। थोड़े से और डिवोर्स को मारना है अपने को। वैसे ये कहाँ हमारे की वाटर्स आ गए क्या? क्या है? चलो यहाँ चलते एक बार। Interesting. This body has been here long, but something keeps the bones from disintegrating. इनका भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या?
है तो चलो इनको मार देते हैं। ऑलराइट, ये क्या रखा है? अर्थरियून। इसको मैंने उधर उसमें कुछ भी डाल दिया तो अपने को कुछ मिला। हाँ, ये और डिवोर्स मिल गया अपने को। ओके, 7 हो गए, 8 9 10, 3 और चाहिए बस। ऑलराइट, तो अभी अपन सुबह करवा लेते हैं। स्टैमिना क्या है? तो ऑलराइट, हेलो। A witcher, right? Yes. Perhaps you can help. My cousin from Vizima lies dying from a venomous monster attack. The medics have no cure. Perhaps you know an antidote? What was the beast? A garcane. It resembled a man, but with wings like a bat. Any more information? The beast was terrifying. Its head deformed. Its jaws horrific. Sounds like a garcane, but garcanes have no venom. But my cousin truly suffers from poison. Perhaps cadaverine. Yes, I remember. Garcanes often feed on carrion. Oh my. After devouring an infected corpse, the garcane may have become a carrier. The medics should look into that. I'll let them know. I knew you wouldn't disappoint me. Thank you. Farewell. Speak plainly. I like what I see and want to get to know you. ये क्या है भाई? Nice. I'm no easy lass, though. You understand a gentleman must court a lady, am I right? You are. Now that we know each other better, you should take the initiative and bring me something ऑलराइट, sweet. तो इसको कुछ स्वीट देना है। शुगर डॉल दे देते इसके लो। A sugar doll sweet as me. Just what I wanted. Let's take our relationship further. Come home with me. Let me thank you. Let's go. ऑलराइट, ये अपना अब अपने करना क्या है? वेट अ सेकंड। आइडेंटिटी टेम्पटेशन, ठीक है। तो हमें बिलीफ के चीफ के पास जाना, जो कि यहाँ रहता है। ये रहा उसका हाउस, बायस ऑफ माइन। Greetings. Hello. What be your moniker? Geralt of Rivia, Witcher. Lucky to have 2 witchers visit us. Ha ha! I, Tobias Hoffman, am the village chief. Haha, yourself. Beastie Beta, what brings you here? I'm here about the notice. I'm here about the notice. What do you have for me? 5 alp teeth, as stated. How vile! Here's the gold I promised. इसको अपने को वो भी देनी, ट्रॉफी। I wanted to talk to you about the Vodyanoi. Julian's in charge of that business. Business? He fishes treasures from the lake, renovates them, and sends them to markets in Vizima. Any work for a witcher? A creature looking like a fish with legs appears by the lake. They say the crypt in the fields is home to a beast. It has huge teeth, resembles a dead mother-in-law. Horrible, they say. Any reward for these creatures? Bring proof, and I'll be generous. The scimitar from the crypt. I've seen enough proof. You're 800 orens. Any non-humans around here? Elves live on the shore. Pretty disagreeable. They're a strange bunch. I see. There's also the fish people. How so? They got fishes. I'll have a talk with... Beastie Beta? हाँ, अब कौन सा बचा है? ये ballistic contact, इसी से मिलना है ना?
What's special about this? Murky water. Tell me about. He lives in. I'll talk. If he's. Thanks for. May I help? I have. Oh, What's murky. The under. Lake waters. Did I send We glory. prize? She's in. Thanks for. May I help? Got any room? 5. इससे बात करनी थी अपने को. How can I help? I saw your notice. Ah, I need wyvern eggs for my famous omelets. Here are 3. Wonderful. Here's your coin. Alright, ये वाला भी कर देते. किसके पास जाना? जूलियन. ये है ना जूलियन. I'm here. I'll buy any basilisk hides you have. Reptile skin shoes are in fashion in Vizima, you know. I have 3 hides. Let me have a look. Undamaged, excellent. Here's your reward. इसको बेच देते, तो इसको पढ़ लेते एक बार. So अब अपने को क्या करना है? ये डिवोर्स को मारना है और इसी से ये वाला मिशन भी हो जाएगा. और ये जाइंट सेंटीपॉइड को भी मारना है और पैसे हो गए आई थिंक सारे. फिर वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे और क्या. ये बास्केट किस चीज़ की? ऑलराइट, सब ले लो. ये कौन है भाई? हेलो. Greetings. You'll not get any further. The bridge is destroyed. It doesn't look uncrossable. There's just forests and meadows over there. Thanks for the warning. Need a witcher? You're a witcher? Yes. Sir? Need a witcher? My life's work stands at the edge of oblivion. You alone can help. What's the problem? I had a dream. The river ghosts begged me for assistance. Me, a humble servant of the Lady of the Lake. A lifetime's chance to show my devotion. The old bridge I tended fell into ruin, yet the ghosts remained attached to it. They asked me to restore it to order. How can I help? What my son and I erect in daytime is destroyed each night. I'll wager it's damnable grigs. My help will cost you. Do you wish 400 orens, or a book about spectres and the king of the wild hunt? Or you can have my son's help during dangerous excursions. He's an excellent archer. Let's trade. Visit the old wench in the village. Beware, she's a witch, but she may know some means of driving off grigs. Alright, तो अब इसको ग्रिग्स चाहिए. Alright, ये हो भी गया भाई अपना. ओह, अच्छा, तो इससे अपन ने ग्रिग्स निकाले थे ना सेंटोन से. इसमें कुछ भी डाल दो, ग्रिग्स निकाले आते हैं. कहाँ है ग्रिग्स? मैं देख लूँ एक बार. ये है ना ग्रिग्स. हाँ. I made a deal with the Griggs. I'm impressed. They won't bother you while you wear this 4-leaf clover. Perhaps I can finish the bridge before the first snowfall. Your reward. Reward. 400 orens, as promised. Thank you. Alright. ये पता नहीं कितने जल्दी हो गया. खैर जो भी था, अपन ने आई थिंक ये मिशन स्किप कर दिया. मतलब हाँ, एकदम से कर दिया. ये बहुत लंबा होता. कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा घूमना भी अच्छा रहता है, उससे मिशन जल्दी हो जाते हैं. तो अभी तो मैं एक फायर प्लेस ढूंढ रहा हूँ. ओके, पहले तो फील्ड पे चलते हैं. हाँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. तो अपन ने वो कल जिसको एक वो ट्रॉफी वाले को मारा था, तो वो ट्रॉफी ले लेते अपन और वहीं से जाके. ये रहा. वोडियन प्रिस्ट. ऑलराइट, तो ये वाला भी हो गया. ऑलराइट, तो अपने को करना क्या है अभी? रात करवा लेनी सबसे पहले तो. अच्छा, यहाँ से अपन पूरा लुक ले सकते हैं. ऑलराइट, तो एक तो ये हो गया. अब 2 और मारने हैं बस. हाँ, एक और उसके बाद वो पेड़ भी तो मारने हैं यहाँ. 3 1. ऑलराइट, ये टेम्पटेशन हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला भी हो गया. अब बस अपने को पेड़ और मारने हैं. ऑलराइट, तो अभी अपन करने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो ये वाला कर लेते. चीफ के पास चल जाते. चलो, ये वाला हो गया. टेम्पटेशन ब्लैक स्मिथ के पास. Yeah. I gathered some shadow dust. Thanks. Which reward will you claim? The gold. Take this pouch.
What a man won't sacrifice for... Alright, ये भी हो गया. अब ये बचा है आखिरी. इसके लिए आई थिंक एलिना के पास जाना है हमें. एलिना क्या नाम है उसका? हीलर, अरे एबिगेल, उसके पास जाना है. Did you post this notice? About the Devourer's teeth? I need 10 for a love potion. Here they are. Thank you. ऑलराइट, तो आई थिंक हमारे सारे मिशंस हो चुके हैं. हाँ, जितनी भी साइड क्वेस्ट थे. अब ये बस एक ये बचा है, ये जाइंट सिग्नेचर करके. और कौन सा बचा है? अब पाथ ऑफ डेस्टिनी बचा है. ठीक है, तो ये अपन अब कल करेंगे मेन मिशन के टाइम पे. ठीक है, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.